मिसेस इंडिया इंकच्या 7व्या पर्वाची घोषणा. झिम्बाब्वे यजमान देश. फ्लायक्रिस्टल विमान सेवा अधिकृत प्रायोजक. मुंबई. जुलै 2026. विवाहित महिलांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या मिसेस इंडिया इंक या स्पर्धेच्या 7व्या पर्वाची घोषणा रविवारी मुंबईतील मॅरियट हॉटेलमध्ये करण्यात आली. 7 वर्षांचा प्रवास, नव्या पर्वाची सुरुवात या संकल्पनेवर हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला विविध देशांचे राजनैतिक अधिकारी, पर्यटन क्षेत्रातील प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, मागील वर्षांच्या विजेत्या आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. गेल्या 7 वर्षांत मिसेस इंडिया इंकने केवळ सौंदर्य स्पर्धा न राहता महिलांना आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. यावेळी 2 महत्त्वाच्या भागीदारींची घोषणा करण्यात आली. झिम्बाब्वे हा 7व्या पर्वाचा अधिकृत यजमान देश असेल, त्यामुळे भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत होतील. तसेच स्पर्धकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. याशिवाय फ्लायक्रिस्टल विमान सेवा ही या पर्वाची अधिकृत प्रायोजक असेल. यासंदर्भातील करारावर कार्यक्रमात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. कार्यक्रमात तज्ज्ञांचे चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले. यामध्ये व्यक्तिमत्व विकास तज्ज्ञ चिराग बांबबोट, दंतवैद्य डॉक्टर नुरीन हेमानी, त्वचारोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रवीण बनूरकर, स्पर्धा प्रशिक्षक जुही व्यास आणि समाजमाध्यम तज्ज्ञ युविका अब्रोल यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी आजच्या काळात व्यक्तिमत्व विकास, चांगले आरोग्य, स्वतःची ओळख आणि समाजमाध्यमांवरील उपस्थिती यांचे महत्त्व सांगितले. संस्थापक मोहिनी शर्मा यांनी सांगितले की गेल्या 7 वर्षांत मिसेस इंडिया इंकमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. आता या स्पर्धेची वाटचाल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू होत असून पुढील काळात आणखी अनेक देशांसोबत सहकार्य करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न असेल. मिसेस इंडिया इंकने सुरुवातीपासूनच विवाहित महिलांना नेतृत्व, व्यवसाय, व्यक्तिमत्व विकास आणि मार्गदर्शनाच्या संधी दिल्या आहेत. 7व्या पर्वात नेतृत्व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास सत्रे, परदेश दौरा आणि अनुभवी मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन अशा अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्पर्धेचे पुढील टप्पे सुरू होतील. भारतीय महिलाओं को, या फिर मैं कहूँगी महिलाओं को काफ़ी हल्के में भाप लिया है. और ये अभी की बात नहीं, ये पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है. हमने बेटियों को इतने सारे अवसर दिए, पर हमने कभी बहुओं को वो अवसर दिया नहीं है. तो मिसेस इंडिया आईएनसी के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि बहुओं को भी बेटियों जैसा जीने का मौका मिले. और इसी मंशा से ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था. पर अब ऐसा हो रहा है कि जो बहुएं हैं वो बेटों से भी आगे जा रही है और उनसे भी ज़्यादा नाम रोशन कर रही है. जो ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, जब अपने दायरे से आप बाहर निकलते हो, आप कई लोगों से मिलते हो, आपको कई सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जो आपको अपने देश में नहीं होते हैं. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से मिलने वाले हो. हमारे साथ फ्लाई क्रिस्टल के सीईओ आज यहाँ पे बैठे हैं. तो यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं. ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रांड एक्सपोजर कंटेस्टेंट्स को हो रहा है और आगे जाके हम जिम्बाब्वे के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करने वाले हैं, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा ना ही मिसेस इंडिया को बट सारे कंटेस्टेंट्स को भी मिलेगा. Very good morning and welcome to India. What will be cross border like India and Zimbabwe will be taking out of is India. Thank you so much. As we are promoting the brand and culture exchange, we are going to be pushing the introduction of a direct flight between Mumbai and Harare. And we are going to be promoting more of tourism. As you are aware, we also have the Cricket World Cup coming up in Victoria Falls. And it will be a very good opportunity for Indian citizens to have a direct flight into Zimbabwe, as there is nothing at the moment. So that's how we're going to be benefiting both sides. Is there any message you want me to carry forward to Zimbabwe while coming this competition? Come experience the smoke that thunders. Thank you. जी एक क्वेश्चन आपसे है. महिलाएं सबसे पहले अपने शत्रु की तरफ कदम बढ़ाने के लिए दूसरे कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोलती है?
वो झूठ ये बोलती हैं कि वो ये सोचती हैं कि उनके दायरे बहुत लिमिटेड हैं, उन दायरों में उन्हें रहना है और उन्हीं में रह के उन्हें करना है सारी चीज़ें। वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाती हैं कि वो अपना जीना भूल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस इंडिया आईएनसी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो औरतें उठ के बाहर आ रही हैं, अपने सपनों को सिर्फ देख नहीं रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं इस मंच के माध्यम से। जैसे आपका ये जो सीजन 7 है, पहले ही वो आपने अलग अलग देश में, तो वहाँ का आपके लिए क्या एक्सपीरियंस था और जिम्बाब्वे में कैसा है? जिम्बाब्वे का तो एक्सपीरियंस मैं लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। I'm very, very excited and I'm eagerly looking forward for season 7. But so far, the finale that we have conducted in different places, different cities, different country, experience has been memorable, no doubt. श्रीलंका was the last international destination. और सबसे प्यारी चीज़ मुझे श्रीलंका में ये लगी थी, जब हम वहाँ गए थे तो हमें बिग ब्रदर के नाम से बुलाया जाता था। तो जो श्रीलंकन्स होते हैं वो इंडियंस को बिग ब्रदर बोलते हैं। तो वहाँ पर जाते ही हमें बहुत बड़प्पन वाली फीलिंग आ गई थी। एंड आई एम श्योर जिम्बाब्वे के साथ हाथ मिला के हम ना बिग ना स्मॉल बट बोलते हैं ना भाई भाई वाला एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। So, what is your experience? I mean, how would you describe it in one word, one sentence? For season 7, a new era begins. That's my one sentence. Season 6, you know. Yeah. So I think transforming, revolutionary is the one word that comes to my mind. The whole pageant has been revolutionary with the evolution of each and every participant that they have gone through. That's lovely, and we're looking forward to Thank you more. so much. Thank you. Thank you. Peter sir, what message did the Zimbabwe or here in India you wanted to carry forward with it? What message you wanted to carry forward with Zimbabwe or here in India? Thank you so much. Yes, I'm glad we invited here, and I've come here on behalf of the ambassador who had been invited, but unfortunately to travel home because of a family bereavement. So I am the deputy ambassador at the embassy, but now in her absence, I'm also the acting ambassador or charged d'affaires to use the French acronym. Yes. So I'm glad that the MC actually mentioned that she's from Bengal. 2 days ago, I was in Kolkata, Bengal, and the event I was attending there was the APP tourist spot, and that was their season 14th edition. And it was the first time that they invited international delegates. It was myself and the Deputy High Commissioner of the British Embassy. And in his remarks, he referred, of course, to what is currently one of the biggest events in the world, that is the World Cup, where England had just lost the semi-finals to Argentina. In my remarks, I noted that yes, the World Cup right now is the talk of the world, but both Zimbabwe and India are not there, are not at the World Cup. But we have one other sport that unites us passionately, and that is cricket. So I'm glad that these are two different events, but they speak to the same issues. I was discussing with the Johannes earlier on, and he was saying, where do we slot this in? This is a pigeon, but it has tourism elements, it has cultural elements, and it has everything. So I attended 2 events in 2 days, different events, but going towards the same thing: cultural connection, tourism, cultural exchange, and investment in all sectors. So, carry forward the same discussion, which locations on the site the patients or the participants should go for? sorry, Which investigation would I think that you suggest that we could go for? okay, for example, the venue itself is the Victoria Falls,
and it's one of the seven wonders of the world and world famous. But we have been encouraging tourists to visit other parts of Zimbabwe. Next door is the Wange National Park. And whereas at the Kolkata, we found actually people who had just come from Zimbabwe, taken by one tourist organization. They had gone to Wange National Park. So we encourage people to explore more of Zimbabwe. Apart from Big Falls, Wange National Park, where we have the Big Five, we also have Eastern Highlands. We also have Kariba, which is one of in fact, the biggest land-made dam is Kariba, which is in Zimbabwe. And there are also a number of sports that take place. So Zimbabwe has many offerings in terms of tourism, which is why we encourage Indian tourists to visit and spend time going around Zimbabwe to see all the tourist attractions. Only, if I may ask, like, you have done maybe 7 years. So what will be your dream for these 7 years experience going further for the experience across India or across the world? When Sir was just taking us through all the destinations and the tourist spots that we can explore in Zimbabwe, I got really excited because the whole pageantry is definitely a transformational experience. But at these beautiful destinations, this experience is going to be nothing less of the most memorable part of their lives. So I believe that one of the most exciting things that I'm looking forward to is this beautiful destination. And I just hope that we don't get distracted and diverted from the main competition because no doubt Zimbabwe is the beautiful country and wildlife is something which Indians really love to explore and enjoy. Another thing, if you ask all the Indians, I would say, everyone sitting in this room, if you ask anyone if you've been to Zimbabwe, I don't think so anyone would say yes. So that's the most beautiful part that we are going to a destination which no one has explored yet. It's untouched, it's beautiful, and it's going to be mesmerizing at the same time. Thank you so much. Thank you for coming. And hopefully आपसे फिर से मुलाकात होगी. Thank you.